हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ASA एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल ग्रामर से एक्सरसाइज नंबर 25। ये एक्सरसाइज आपकी प्रोनाउंस पर बेस्ड। यहाँ आपको सेंटेंसेस जो दिए हैं उसमें आपको जो प्रोनाउंस हैं उन्हें पॉइंट आउट करना है और फिर ये बताना है वो किसके लिए स्टैंड करते हैं। एलिस वॉज नॉट अ बिट हर्ट एंड शी जम्प्ड अप ऑन टू हर फीट इन अ मोमेंट। शी एंड हर, ये जो हैं प्रोनाउंस हैं और ये किसके लिए स्टैंड किए जा रहे हैं? एलिस के। देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल बट दे वर ऑल लॉक्ड। दे, ये है प्रोनाउन और ये यूज किसके लिए किया जा रहा है? डोर्स के। एलिस ओपन द डोर एंड फाउंड दैट इट लेड इनटू अ स्मॉल पैसेज। प्रोनाउन क्या है? इट। और किसके लिए कहा जा रहा है? अगेन डोर के लिए। आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच said Alice. I के लिए स्टैंड हो रहा है Alice के लिए। You are not attending, said the mouse to Alice severely. What are you thinking of? You again for किसके लिए है? Alice. Come back, the caterpillar called after her. Alice turned and came back again. Her stands for Alice. Harry bought his book and laid it on the table. His यहाँ स्टैंड हो रहा है हरी के लिए। इट स्टैंड कर रहा है बुक के लिए। करीम has lost his dog and cannot find it. His stands for Kareem and it stands for dog. Suresh is at the head of his class for he studies hard. He stands for Suresh. Rama, you are a lazy boy. U stands for Rama. The camel is a beast of burden. It is used to carry goods across the desert. It stands for camel. The female lion is called a lioness. She has no mane. She stands for lioness. यहाँ शायद ये मेन गलत लिखा हुआ है, name. The horse fell down and broke its leg. Its stands for horse. Birds build their nest in trees. Their stands for birds. If the thief is caught, he will be punished. He stands for thief. Train up a child in a way he should go. He stands for child. And Nathan said to David, Thou art the man. Thou stands for David. ये आपकी एक्सरसाइज जिसमें आपको प्रोनाउंस करने हैं, बताने हैं किस किस के कौन से प्रोनाउंस हैं और वो किसके लिए बताए जाते हैं। एक्सरसाइज अच्छी लगी सब्सक्राइब करें ASA एजुकेशन और मिलते हैं एक्सरसाइज 26 में।